20 minutes. We want this 20 minutes peaceful for Baba. Thank you. अनंता तुला ते कसे स्तवामी अनंता
रूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्थानसंहारहेतुं स्वभक्तेच्छयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भगवद्वान्तविद्वांसमार्तण्डविद्यं मनोमान्मुनिर्ज्ञानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नादितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणसम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तीर्थमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादि सेवां नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातर्कलीलाविलासै समावेश्रुतेशानभास्वरप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सतावेश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोदं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनासं पुनीतप्रभोहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साईश कृपानिधे किल नृणां सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् न्यान्यशरण्यं मम सायिरूपधररागोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपहतचित्तशुद्धये चिन्तयाम्यमर्निशं मुदा शरत्सुधांशो प्रतिमं प्रकाशं कृपादपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिनाथुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेत् भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान्धपरान्धपुण्यकान् प्रसीद साये सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूतचित्तास् सत्पादसेवनरतः सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितोर्धवनीर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत् पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् रुसो मम प्रियाम्बिका मधवरी पिता हि रुसो रुसो मम प्रियाङ्गना प्रियसुता त्वया हि रुसो रुसो भगिनी बन्धुनि श्वशुरसासुबाई रुसो मदग्ध गुरु साई मां भजवरी कधी रुसो रुसो न सुनवाईता मजन भ्रातृजाया रुसो रुसो न प्रिय सोयरे प्रिय सगे गद्याते कुसो कुसो सुरदना
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं आरमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याधीशात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तारापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरायकृतपेश श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामके विश्वे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजाधिराज योगिराज परब्रह्म साईनाथ महाराज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। Sir guides his committee in carrying out various programs which includes cultural, spiritual and social activities. I would like to request to Mr. Rajendra BN sir to keep guiding us, helping us and supporting us in future too. Thanks sir. I would like to call Sachin Bhai Kulkarni for felicitation of Mr. Rajendra BN sir. Wait, sir. Thank you very much, sir. One second. Yes, sir. और क्या sir? Thank you very much, Sachin sir. Thank you very much, Rajendra BN sir. It is required, sir, actually. Thank you, sir. Thank you, sir. I would like to request all the devotees of Sai to please be seated and keep silence. Still program is going on, and we need to guide you that devotees who are coming for darshana, please you can make a queue right side of the stage, and you can be exiting from left side of the stage after 5 minutes. After 5 minutes. Okay, so please be silent, keep silence here. Guru is very important to us. Today we are celebrating Guru Purnima program in front of our Sai Baba. Sai Baba should bless us with all the happiness and health. So I would like to share here certain things about our Sai Seva Samiti. It was started in year 2015.
the same year we started celebrating the Guru Purnima program. We perform Sai Baba Arati, Bhajanas every Thursday. This is the 8th year that we are celebrating Guru Purnima. Our graph of number of devotees is increasing every year. In 2019, we had celebrated 5th year of Guru Purnima, in which there were more than 3,000 devotees like you were involved. We had grand celebration including a long rally in having Dol Tasha Vadan, Lezim Padak, which were called from Belgaum. We had many more plans. We have many more plans for future if our Sai Baba blesses us and devotees like you will be with us. So I would like to say our Sadguru Sai Baba should bless us. We have the hope that in the coming years we will be celebrating the Guru Purnima program in the more variety of ways. Next, I would like to call Sachin Bhai Kulkarni to say a vote of thanks. Friends, I would like to say here that there are two counters made for Mahaprasada. One is there for ladies, other is for gents. So please follow the rules. Don't make crowd. Be disciplined. Be in a queue. Thank you. Sachin Bhai Kulkarni is one who started Sai Baba Aarti and Bhajana programs in our Eternal Lila Society. He is the backbone of our and help to explore the hidden art within us. Sachin Bhai is founder of Shambhavi Dhol Tasha Pathak. He is to Guru to all of us who are the members of Dhol Tasha Pathak, that is Shambhavi. Friends, Sai Baba had said to have Shraddha and Saburi means belief in God. Shraddha means belief in God and Saburi means patience in mind. So if you have belief in God and you have patience through your life, you can achieve everything that you aim. So here I pray to our Sadguru Sai Baba to bless us with all the success and happiness. I would like to say thanks to our Sachin Bhai Kulkarni for being us as a friend, philosopher and guide. Very thanks Sachin Bhai. So I would like to call Satish Bhai for felicitation of Sachin Bhai Kulkarni. 1 second, sir. Wait, sir. 1 second. Yes, sir. Look here, sir. Look here. 1 second. Thanks Satish Bhai. Yes, sir. And thanks Sachin Bhai Kulkarni. Thank you very much for your great support. Wait, sir. So when Shraddha is Saburi is there, we could achieve this program today, survive and we could do this program successfully. So thanks to God, thanks to Sai Baba's blessings that He has taught us to keep Shraddha and Saburi and really it has given the example. Thank you. Thanks to you all the devotees of Sai Bhaktaran that you have come here to attend the program. Okay, thank you. So, you like Sai Baba? That's why you all are here. Say you like Sai Baba? That's why all of you here. Say Baba Sai ki, Sai Baba ki, Sainath Maharaj ki. Such a beautiful and wonderful program was arranged in years, and my team were working for this program from last 15 days. So today my first thanks is going to God and nature that He is allowing us to
celebrate this function and this Guru Purnima in this blissful environment. Every time you go to temple, you wash your feet first, wash your leg first, and then you enter into the temple. So it is make way for you to wash your feet and come with the Shuddh into the Baba's temple. Yeah? Om Sai Ram. So my thanks to nature and Baba. And I would like to thank Sri Lok Kalyan Utsav Trust, Sri Rajendra sir and his team who is guiding us from day one and supporting us for in all these events. Yeah. Along with that, I would like to thank my entire team. There is contribution from every single person in this team. From day one, they are taking efforts to make this program successful, peaceful, and enjoyable to all of you. To bring this service and this darshana for all of you, to all of you. They have taken huge efforts from collecting the contribution to making the food package and everything. Okay, so just thankful to all Sai Baba Samiti. And I would like to say my own team Shambhavi who has performed their Dol Tasha Patak. So thank you to team Shambhavi also. Okay, so now that's it. I will not take much time in between you and Baba's Darshana. So once you starting Darshana, queue is starting from the right side. From your, actually when you are looking at the stage, it will be on your left hand side. Don't be in hurry, it's a matter of 20 minutes. Okay, within a 20 minutes we will finish up everything. Okay, just cool and calm, take Darshana in peaceful environment, blissful level, it is a spiritual. So just support us, don't be in hurry buddy. 20 minutes we will finish it up. Okay, just go from your left hand side. Finish the darshana, go for a prasada. Okay. At the end of the pendle, there is a prasada food counters. You can collect the, there are 2 food counters. So you choose any one of them where low crowd is there and take the prasadam also. Om Sai Ram. Yeah, so there are 2 counters. One is for ladies, one for gents. Okay, for food counter. Okay, so take accordingly. Thank you. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Sham. Om Sai Bhagavan.
के साई रवि, दया के साई चांद है। साची प्रेम डोर से रहे वो सबको बांध है। मंदिर मस्जिद एक समान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। सबको समझते वो एक सा, राजा हो या रंक वो। भेद और भाव के मिटा रहे कलंक को। सबको समझते निज संतान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई के द्वार हर घड़ी सत्य की बरखा हो रही। झूठे इस जहान के पाप काले धो रही। करते हैं शंका का समाधान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। बैर रहित कशिश भरी, साई से निर्मल प्रीत लो। दुश्मनी जो कर रहे, उनके दिल भी जीत लो। सब पे चलाते प्रेम के बाण, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई हमें सिखा रहे, सबका मालिक एक है। एक सी नजर से वो रहे, सभी को देख है। करते न सहते जो अभिमान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई के द्वार शीश धर, दो घड़ी जो सो गए। नफरतों के नाग भी विष रहित वो हो गए। हर एक मुश्किल करते आसान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई के दर असर होता हर दिली फरियाद का। बे औलाद पा गए, सुख वहाँ औलाद का। बेजान भी वहाँ पा गए जान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम, साई श्याम, साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे
सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साफ शुद्ध होती है जिन दिलों की भावना, पूरी होती उनकी ही साईं के द्वार कामना। कष्ट मिटाते कष्ट निदान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं की धुनी से कभी तुम भभूत ले भी लो, हर बला से लड़ने की दैवी शक्ति ले भी लो। जग में बढ़ाते भक्तों की शान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। आस्था में भीग के साईं को जो पुकारते, साईं खिवैया बन के ही उनकी नैया तारते। मन की दशा वो लेते हैं जान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। चमत्कार साईं बाबा ने जब निराले थे किए, दिव्य अनोखे पानी से जल गए थे सब दिए। पल में किया चूर था अभिमान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। जिन क्रूर दुष्टों ने डर दिलों में भर दिया, सीधे साधे संत ने सही मार्ग उनको दिखा दिया। दया धर्म का वो देते हैं ज्ञान, शिरडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं के द्वार जो झुके, मैल मन का साफ कर, कसूर सबके साईं ने माफ किए उनको अपना कर। कहता तभी है सारा जहान, शिरडी के दाता सबसे